Hello everybody, welcome back. We would be starting with a new chapter today. In the previous session we finished off with unit number 1 and now we are moving to unit number 6, that is we are moving from 11th NCERT textbook to the 12th NCERT textbook. Now you have already done 2 chapters from unit number 6, that is human reproduction and reproductive health. Right now we're going to look at the other 2 chapters. The other 2 chapters are reproduction in organisms. Now this is overall view of the concept of reproduction. Now actually this should have been done at the start, but since it's a very simple chapter and all the terms you have already studied in lower standards, so maybe we can do it alongside this chapter also. The chapter that we are going to focus on is reproduction in flowering plants, sexual reproduction in flowering plants, not the asexual part, sexual reproduction in flowering plants. Now we have already covered a great deal about plants in morphology, right? The first chapter of our 11th standard, if you remember. Now therein we did the topic of flower. Now if you have forgotten flower, I would request that you can go back and look at that particular video wherein we have described the structure of flower. When we are talking about sexual reproduction, obviously we'll be closely looking at the structure of flower. Right? Flower has got 4 whorls, the calyx, corolla, androecium and gynoecium, and amongst that the essential whorls are androecium and gynoecium because they are the ones which help in sexual reproduction. Now in the first part of our discussion we'll be looking at how these are structured, the androecium and the gynoecium. Today we'll be talking about the development of the male gametophyte. So we'll be looking at the stamen structure. Within the stamen we've got microsporangium, the pollen sac. Within the pollen sac you have formation of the pollen grain and how the pollen grain will go on to form the male gametophyte. So all that discussion is going to happen in this session, right? So can we start please? Okay. Now we are going to divide this discussion into these 4 parts, right? So first we'll be having a look at the structure of anther. Then we go to the transverse section of the anther, and then the structure of pollen grain, and finally the development of the male gametophyte. Right? These are the 4 parts in which we are going to divide our discussion. So first we take up the structure of the anther. Now anther, right, is made up of units which are called as, right, the androecium is made up of units which are called as stamen. Now stamen is called as microsporophyll. Now sporophyll was a term which we introduced in Kingdom Plantae, right, and first time sporophyll ये word आया था pteridophyta में, right? Sporophyll is those plants which produce spores, and आगे जाके these spores become 2 types, male and female. The males are microspores and the female spores are megaspores. So here we have one of the floral whorls which is responsible for production of male spores. So it's called as microsporophyll, right? So for your reference I have written it down here. Stamen is also called microsporophyll. Now stamen is made up of 2 parts, right? The upper bulb like portion is called as the anther, and the lower tube like structure is called as the filament. Now filament is the sterile part, right? It's a non-reproductive part. Anther is the fertile part of the structure. So ab anther. Now anther is made up of anther lobes. Now we can see these 2 parts. So the anther lobes can either be a single anther lobe or you can have 2 anther lobes.
If the stamen has only one anther lobe, we say it's a monothecous structure. And if there are two, as we find in this diagram, we say it's a dithecous structure or a dithecous anther, right? So you can have a monothecous anther or a dithecous anther. If you remember, monothecous में I had given one example, morphology में दिया था, right? हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, उसका जो एंथर है वो किडनी शेप्ड होता है, इसलिए उसको रेनिफॉर्म, रीनल शेप्ड रेनिफॉर्म एंथर बोलते हैं, राइट? तो मोनोथीकस है, डाइथीकस है. नाउ विद इन ईच एंथर लोब यू हैव पोलन सैक, 2 पोलन सैक. इन ईच एंथर लोब यू हैव 2 पोलन सैक. तो अगर मोनोथीकस एंथर है तो टोटल सिर्फ 2 ही पोलन सैक हो गए, और अगर डाइथीकस है 2 एंथर लोब, सो यू गोइंग टू हैव 4 पोलन सैक. पोलन सैक आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट? ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स कि जो स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर का प्रोडक्शन होगा वो स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं. सो पोलन सैक के अंदर pollen grains produce हो गए. That's why the pollen sac is termed as microsporangia, right? So microsporangia. So a dithecous anther will have 4 microsporangia. That's why it is called as a tetrasporangiate structure. 4 sporangias, right? So pollen sac, microsporangia. Now each of the pollen sac have got a mass of cells. Now these cells are called pollen mother cells, right? Now how they develop, maybe थोड़ा सा आगे अपन करेंगे तो आएगा अपने को. Now these mother cells, each of these mother cells is diploid, right? So ये mother cell को हम लोग क्या बोलते हैं? Microspore mother cell, Microspore mother cell, right? Each of the mother cell, all are diploid, right? Let's say for example, एक pollen sac में, let's say around, there are 50 pollen mother cells. There could be 5,000, there could be 5 lakh also, depending on the species or the plant that you are opening up. ठीक है? जितने भी mother cells हैं, they all undergo meiosis. All of them undergo meiosis. And meiosis में you know that one diploid cell will produce 4 haploid structures and the chromosome number will become half, right? So each of the mother cell produces 4 pollen grains, 4 pollen grains which are now called as microspores. देखो haploid लिखा है यहाँ पे. So what is the relationship between a mother cell and a pollen grain? 1:4. Pollen grain undergoes meiosis to form pollen grain. Pollen mother cell undergoes meiosis to form pollen grain. 1:4. Please be very careful. Each of the pollen grain, each pollen grain undergoes 2 mitotic divisions. 2 mitotic divisions to form 2 male gametes. ध्यान से सुनना please. 1 mitosis produces 2 cells. So your 2 mitosis should be producing 4. But what I said, 1 pollen grain undergoes 2 mitotic divisions but yet produces only 2 male gametes. Please. So what is the relation between a pollen grain and a male gamete? 1:2. Each pollen grain producing how many male gametes? 2 male gametes. So pollen mother cell, 1 pollen mother cell undergoes 1 meiotic division to produce 4 pollen grains. Each pollen grain undergoes 2 mitotic divisions to produce 2 male gametes. So tell me, what is the relationship between a mother cell and a male gamete? Is it not 1:8 now? Right now? 1 producing 4.
each of the pollen grain producing 2. So 4 pollen grains obviously will be producing 8 male gametes, right? Now, so 1:4. This is pollen grain to male gamete will be 1:2, but mother cell to male gamete is going to be 1:8. क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि numericals you will get on the basis of this, right? Apparently looks very simple. Apparently it is looking very simple, right? But when asked conjointly along with a particular flower which you have studied in the families, where the condition of stamen you know, right? For example, Fabaceae में it is 1+9, तो तुमको मालूम है कि 10 stamen है वहाँ पर. So they might give you the number in each of them and you know that 10 है तो accordingly you will have to calculate it. So please don't discount these kind of or don't dismiss them as very easy. अगर family के साथ combine करके आ गया तो you might have to do a thinking and some calculation to do. ठीक है? So this is the structure of anther, right? Quick recap for that. Androecium is the male reproductive whorl of the flower. It is made up of units which are called stamen. Stamen is made up of anther and filament. Anther made up of anther lobes, either 1 or 2, monothecous or dithecous. Within each anther lobe, you've got 2 pollen sac. So 2 anther lobes will have 4 pollen sac, tetrasporangiate structure. Within each pollen sac, you will have lot of mother cells, right? Lot of mother cells called as pollen mother cells or microspore mother cells. Each of the mother cell is diploid. Each mother cell undergoes meiosis to produce 4 pollen grains. Each pollen grain undergoes 2 mitotic divisions to produce 2 male gametes. Now that's a question that we have to look forward to. उसका आंसर ढूंढना है अपने को कि 2 माइटोसिस में 4 होने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 2 क्यों है? वो डेवलपमेंट में आएगा अपने को लास्ट में एकदम. ठीक है? So I hope this sequence is followed, and if you can just copy this flow chart which I have given you, will be very useful for you, right? So अब we go to the next part, the transverse section of the anther. Now we are taking a transverse section, a horizontal section through the anther, and trying to have a look what is inside this anther. ठीक है? Fine. Now anther, now this diagram is taken from the NCERT. NCERT का diagram ये, right? If you can see now, this is the transverse section of the anther. I can see it is a dithecous anther. 2 anther lobe दिख रहे हैं मुझे, और हर एक anther lobe में I can see these are the 2 pollen sac. So 4 pollen sac are seen. They have taken this section. Okay. So anther will show 2 structures, anther wall and a pollen sac. Right, so we see the pollen sac, the cavity in the middle, center में यहाँ पर, और उसके आसपास जितने भी layers है, they make up anther wall. Now what are the structures in the anther wall? From the outside to the inside, ये important है, right? They might twist the question and they might ask you from the outside to inside or from within to outside. Please be very careful while reading the question. So from outside to inside we have epidermis. ऑब्वियसली सबसे बाहर वाला लेयर है तो प्रोटेक्टिव होना चाहिए, और ये पहले से रहता है एंथर के ऊपर, राइट ना? ये डेवलपमेंट में नहीं आता, डेवलपमेंट में बाकी 3 लेयर आएंगे. ओके, द सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, अगेन अ सिंगल लेयर, राइट? जस्ट जूम इन फॉर यू सो मे बी यू कैन सी मोर प्रॉपर्ली. देखो ये सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम. द थर्ड लेयर आर 2-3 layers. The third section is 2-3 layers. It's called as middle layers. Now these middle layers, when the anther matures, right ना, so जब mother cell का meiosis होगा, meiosis से pollen grain बनेंगे, pollen grain से जो है वो आगे, तो ये सब maturity का process है. तो जैसे जैसे पूरा anther mature होगा, अब ये middle layers जो है ना वो degenerate हो जाएंगे, they will degenerate, और सबसे अंदर का layer है tapetum. राइट, इफ यू कैन सी ये थोड़े डॉटेड वाले अंदर पार्ट्स है
कैन सी ग्रैन्युलर पार्ट, राइट, यहाँ पर ज़्यादा बराबर दिखेगा, न्यूक्लियस के आसपास सारा ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, राइट, मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होगा ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा, राइट, सिक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये रहा टेप्टम, ठीक है। सो व्हाट आर द 4 लेयर्स in the anther wall? We've got the epidermis, we've got the endothecium, a couple of layers, 2-3 layers called as middle layers, and the layer which is called as tapetum. Important अभी। अब ये जो pollen sac है ना, pollen sac is not a separate physical structure. क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, माउथ। अब मुझे बताओ, क्या माउथ एक फिजिकल स्ट्रक्चर है? नहीं। व्हेन यू सेपरेट द लिप्स, द ओपनिंग क्रिएटेड इज कॉल्ड एज द माउथ, राइट। व्हेन यू सेपरेट द गार्ड सेल्स, द ओपनिंग क्रिएटेड इज स्टोमेटा। सो टेप्टम सबसे अंदर का लेयर है, तो टेप्टम जो कैविटी को एनक्लोज करता है वो पोलन सैक है, राइट ना। सो टेप्टम लास्ट लेयर है अंदर का, तो टेप्टम के अंदर जितना भी पार्ट है वो पोलन सैक है। सो इज टेप्टम द लेयर विच इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पोलन सैक, और आई शुड से टेप्टम इज द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द पोलन मदर सेल। इज टेप्टम द लेयर विच इज गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पोलन ग्रेन, यहां पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, राइट ना। सो टेप्टम के जितने फंक्शंस है वो सब डायरेक्टली इनको अफेक्ट करेंगे, मदर सेल और पोलन ग्रेन को, right? So now let's have a detailed look at these 4 layers. Okay, अब outermost layer देखो, epidermis, एक मिनट, just a minute, yes, epidermis. So outermost common wall layer, flattened cells, protective in function. मैंने क्या बताया था कि सबसे बाहर का लेयर है तो प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। Now the second layer is endothecium. Endothecium, internal to epidermis. epidermis के अंदर है, single layer of cells, right ना। So first layer epidermis है, second layer endothecium है। Characteristic fibrous thickenings of callus. Now callus is a substance, right ना। So उसकी fiber like thickenings होगी उसके radial walls पे, right, radial walls यानी side के walls होते हैं उसके। Now fibrous thickenings and hygroscopic nature, ये जो endothecium का सेल है it is hygroscopic in nature. You know what is hygroscopic? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? अबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट, राइट ना। जैसे सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक होता है, राइट, वी हैड डन वेलमेंट टिश्यू हाइग्रोस्कोपिक, राइट ना। सो अबिलिटी टू एब्जॉर्ब, सो व्हेन देयर इज मॉइस्चर इन द एयर, ये जो एंडोथीसियम है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, बट लेकिन आसपास का एरिया जब ड्राई हो जाता है, समर ड्राइनेस, तो ये सारा का सारा मॉइस्चर छोड़ देता है एंड इट बिकम्स वेरी ड्राई, एंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस इट क्रैक्स, एंड दिस क्रैक इन द एंडोथीसियम लीड्स टू ओपनिंग ऑफ द एंथर। जब एंथर का वॉल ओपन अप होगा तो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, राइट ना। सो दैट इज कॉल्ड डेहिसेंस ऑफ एंथर, that is called dehiscence. So endothecium is the layer which is responsible for opening up of the anther wall जब pollen grains have to be released outside. That is what will cause pollination. ठीक है, are we clear with that please? और dehiscence, endothecium में what nature of the cell is responsible? The fibrous thickening of the callus and the hygroscopic nature is helping in dehiscence of anther, opening up of the anther, breaking down of the wall of the anther at maturity. Middle layers, I told you 1 to 3 layers of parenchyma cells. याद आ गया ना? Where in doubt, parenchyma. Bindas. The cells of these layers degenerate at maturity. Now, I can show you one image.
ये देखो, ये वाला जो इमेज है वो ध्यान से देखना। देखो ये ऑब्वियसली जब एंथर ओपनड अप वाला इमेज है तो ये मैच्योर एंथर है। अब मैच्योर एंथर में देखो ये पोलन सैक, देखो यहाँ पर पोलन सैक की पोजीशन देखो। Can you see quite a distance between the pollen sac here? That means these are occupied by middle layers. लेकिन यहाँ पे कैन यू सी द डिस्टेंस बिटवीन द पोलन सैक का मार्जिन्स बहुत कम है। मतलब जैसे जैसे मेच्योरिटी आती गई वैसे वैसे मिडिल लेयर के सेल्स जो है वो डी जनरेट हो गया। ऑब्वियसली यहाँ का लेयर डी जनरेट होगा तो पोलन सैक की पोजीशन नज़दीक होते जाएगी। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। एंड फाइनली वी कम टू टेप्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट ना। यहाँ 4 या 5 पॉइंट है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्लीज, इनर मोस्ट वॉल लेयर, कौन सा वॉल लेयर? एंथर का इनर मोस्ट वॉल लेयर, सराउंडिंग द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। यानी द इनिशियल टिश्यू, initial group of cells which is present in the pollen sac cavity is called as sporogenous cells, राइट। ये जो पोलन मदर सेल्स है वो पहले के स्टेज में होता है स्पोरोजेनस सेल्स। उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइटोसिस होते 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 अब मदर सेल बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट इट इज अ मास कॉल्ड एज स्पोरोजेनस सेल्स। Cells are larger in size. Now we are talking about tapetum ka cell, not a pollen mother cell. Please, cells are larger in size. ये देखो, if you see the tapetum का cells, यहाँ के बाहर के 3-4 लेयर देखो और टेप्टम का लेयर देखो, तो कैन यू सी टेप्टम का सेल्स आर लिटिल लार्जर इन साइज। Dense cytoplasm, right? Cytoplasm is quite dense. And one or more diploid or a polyploid nucleus, मतलब या तो एक डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस और मोर डिप्लॉइड यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो यू कैन हैव अ यूनिन्यूक्लियड कंडीशन और अ मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन। और हो सकता है जो न्यूक्लियस सिंगल भी हो तो वो डिप्लॉइड भी हो सकता है या पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। अब ये कंडीशन जो है, राइट, सी डिप्लॉइड न्यूक्लियस तो अपने को समझ में आता है, लेकिन ये डिप्लॉइड से जब पॉलीप्लॉइड की तरफ जाता है यानी इसकी प्लॉइडी बढ़ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। अंदर ही अंदर माइटोसिस होता है उसका, राइट, तो उससे उसकी प्लॉइडी बढ़ जाती है। सो आई कैन हैव अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस और अ पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस। So because of the dense cytoplasm, what it does, it provides nourishment to the developing microspores, pollen grains. Contributes in the formation of sporopollen. Now ये sporopollen, now टेप्टम के सेल्स जो है ना, they give a substance called as Yubish granules. Yubish granule से sporopollen बनता है, राइट। जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अपने को आएगा, ये देखो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना। पोलन ग्रेन के जो अंदर का लेयर उसको इंटाइन बोलते हैं और जो बाहर का रफ लेयर दिख रहा है वो एक्साइन है, ठीक है ना। तो एक्साइन इज वेरी हार्ड, राइट, एक्साइन इज वेरी टफ। नाउ व्हाई इज इट हार्ड, व्हाई इज इट टफ? बिकॉज पोलन ग्रेन्स दे रिमेन इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉलिनेशन जब होता है तो इट इज नॉट एज इफ पोलन ग्रेन्स निकले और जाके बैठ गए, नो। जैसे विंड पॉलिनेशन होता है, राइट ना, सो पोलन ग्रेन्स हैव टू स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड इन द ग्राउंड, दे हैव टू स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इन द एटमॉस्फेयर दे कैन बी एक्टेड अपॉन आइदर बाय केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर और बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दोनों से उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो पोलन ग्रेन मर जाएगा। अब पोलन ग्रेन्स अगर मर गए तो पॉलिनेशन कैसे होगा, राइट ना। सो व्हाट डज दिस स्पोरोपोलन डू? स्पोरोपोलन ये सब से उसको बचाता है, राइट। सो वी कैन से इट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ स्पोरोपोलन। स्पोरोपोलन इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस जिसपे किसी भी एंजाइम का काम नहीं होता है, राइट। तो सच हार्ड इज स्पोरोपोलन, ठीक है। तो स्पोरोपोलन कहाँ से आता है? टेप्टम से आता है, ठीक है। लास्ट में इट सिक्रीट्स पोलन किट। नाउ टेप्टम से देयर इज अ येलोइश स्टिकी सब्सटेंस which is called pollen kit, and because of this sticky pollen kit, pollen grain का नेचर स्टिकी हो जाता है।
So that's why the pollen grain is able to attach to the body of the insect, right? अगर smooth रहेगा तो slip हो जाएगा. So when insect comes near the flower in search of nectar or whatever, so pollen grains have to be transferred on the body of the insect. So how do they attach? How do they stick? Because the surface is rough and sticky. Tapetum also secretes hormone IA, you know, it's indole acetic acid, and an enzyme called as callase. Right? Now, what is the role of this callase will come in the next step. ठीक है, तो अब इसके कितने functions हो गए देखो. Number 1, it provides nourishment to the developing microspore. Number 1. Number 2, sporopollenin. Number 3, pollen kit. Number 4, IAA. And number 5, callase. So 5 functions of tapetum. Very, very important. Right? MCQs में tapetum के बारे में पूछते ही पूछते हैं. ठीक है? So the wall of the anther is made up of, come again, outside to inside, epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. Right? What is the other structure in anther? अब क्या बचा? Tapetum के अंदर जो cavity है, which is nothing but pollen sac. Let's have a look at that. Pollen sac, which is called as microsporangia. I told you, जो cavity के अंदर spores develop होंगे, उस cavity को हम लोग sporangias या sporangium बोलते हैं. Pollen sac encloses primary sporogenous tissue. I told you, ये mother cell जो है, initially जो group of cells होता है, उसको sporogenous tissue बोलते हैं, which divides and redivides mitotically for several generations to form diploid sporogenous. What is this diploid sporogenous tissue called as? Microspore mother cell or pollen mother cell. Right? उसका last generation is nothing but the microspore mother cell. ठीक है? Each mother cell undergoes meiosis. Have a look at this diagram. Yes? So meiosis 1, you know meiosis में 1 and 2 is there, I don't tell you. So mother cell undergoes meiosis. So meiosis 1 के बाद 2 हो गए and meiosis 2 के बाद 4 हो गए. Right? अब ये 4 एक साथ अटैच्ड है, 4 पोलन ग्रेन्स. राइट? और इसके ऊपर एक लेयर है, यानी चारों जो है वो एक लेयर में एनक्लोज्ड है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कैलोज. कैलोज. अब ये कैलोज को कोई ना कोई डाइजेस्ट करेगा, ये कैलोज खुलेगा और ये चारों पोलन ग्रेन्स अलग अलग जाएंगे. राइट? वरना यू कांट एक्सपेक्ट 4 पोलन ग्रेन्स टू गेट रिलीज्ड एट अ टाइम. राइट ना? हु इज गोइंग टू सिक्रीट एन एंजाइम टू डाइजेस्ट कैलोज? ये रहा एंजाइम कैलेज. टेप्टम इज इन कॉन्टैक्ट, ये रहा टेप्टम का सिक्रीशन कैलेज विल डाइजेस्ट दिस कैलोज एंड हेल्प to separate these 4. So, is this a tetrad now? Is this a tetrad? Right now, can you see tetrad of 4 haploid pollen cells? अच्छा, one extra point. ये tetrad का जो arrangement है ना, right? अब if you see this tetrad, can you see दोनों की जोड़ी side by side है, right ना? ये जो है ना, ये typical dicot का arrangement है. Dicot में ऐसे ही arrange होता है. इसको हम लोग बोलते हैं आइजो बायलैटरल अरेंजमेंट. आइजो बायलैटरल इसी तरह अरेंज होता है. मोनोकॉट में अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है. राइट ना? उसमें कैसा होता है कि इफ यू हैव सीन यू नो व्हेन यू प्ले स्नूकर और बिलियर्ड्स, राइट ना, सो यू गॉट दोस बिलियर्ड्स बॉल्स, राइट ना, सो यू प्लेस 3 balls to form a triangle and you place 1 ball right at the center. It forms a tetrahedron. Tetrahedron, right now? So उसका arrangement is those 4 pollen grains are arranged like that. 3 नीचे और 1 ऊपर, उसको tetrahedral बोलते हैं. So either the arrangement of pollen grain is isobilateral or tetrahedral, right? And when the digestion of the wall outside is done, you have 4 pollen grains separately. ठीक है? So where are the pollen grains stored now? In the pollen sac. What is the pollen sac called as? Microsporangium. ठीक है? Finally moving to the pollen grain का structure. Right now I think we will carry this in the
next video. Okay.